This call is now being recorded. So for the speed purpose, I will turn off my video. In between, I will turn it on. I hope you can see the slide. So the topic है हम लोग का वो है communication security. So I have kept this very non-technical. इसमें technical चीजें बहुत कम है. Basic discussion ज़्यादा है. Communication security means security of any medium that we use for communication. So it could be email, it could be apps like WhatsApp, could be even mobile phone. So all of them fall into the broad category of communication security. But mainly I will focus on emails. और उसके बहुत सारे रीजन है because email has become the medium of official communication nowadays. In fact, in many industries, even in many institutes, they do not do paperwork anymore. बहुत कम होता है paperwork, and most of the communication they take place through email. When you receive something on email, it is considered an official document in today's time, right? So that's why security in emails is important. But at the same time, जो भी attackers हैं या malicious users हैं, they also target emails, especially of companies and institutes, so that they can do many things which are harmful to the institute or organization, but very useful for them in order to, earn money and everything. Okay? So उस लिहाज से email has become very crucial communication medium in today's time. So we'll focus primarily on that. और थोड़ा सा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि AI tools जो आजकल हैं और आ रहे हैं, I hope all of you know about or at least have heard about AI tools. तो वो इन AI tools की वजह से कैसे security या email security या communication security has become difficult to implement in many cases. So with that basic introduction, let me start with this slide. Communication security, we already know that communication is the backbone of modern organizations. सारी चीजें communication पे based on different tools. So sensitive information often it goes through emails, messaging apps, and there are other devices as well, including mobile phones and calls and everything. So when we say what there is a term mentioned here, sensitive information. तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी चीज जो अटैकर्स के लिए या पीपल इन बिटवीन उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है और हम लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है. सो इट कुड बी बैंक डिटेल्स, could be passwords, it could be pin codes, it could be some information regarding the rules जो अभी तक डिस्प्ले नहीं हुए हैं, अभी होंगे थोड़े दिन में. कोई कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है, everything will fall into the category of sensitive information. और आप लोग जानते हैं because you are already part of that, इस टाइप की information को भेजना भी जरूरी है, but they should be secured. And as in today's time, most of the communication is taking place through emails and apps, तो वहाँ पे security बहुत ज़्यादा important है. ठीक, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने की बात है कि ये जितने भी apps है, email services हैं, they are not local services. वो हम लोगों की अपनी services नहीं है. We borrow them from other organizations. So for example, जब हम Gmail इस्तेमाल करते हैं या even amu.ac.in इस्तेमाल करते हैं, so that email is hosted on Google server. आप देखते होंगे कि आप Gmail के through actually जाके login करते हैं, right? So it's not our own email. We have taken it from other organizations. तो इसका simple मतलब ये है कि data तो आपका बाहर जा ही रहा. Now the next part is how secure it is. Right? It depends on the security mechanism that organization is using, जिसके थ्रू हम ये सर्विसेज लेते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो जीमेल के थ्रू ईमेल्स हो या कोई और ईमेल सेंड्स हो. तो डेटा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आ सकती है? इट कुड बी द प्रॉब्लम ऑफ डेटा थेफ्ट. whatever data you are using, somebody is stealing that data. ये डेटा क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, वो तो हो ही सकता है, लेकिन इसके अलावा ये आपके फोटोज भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. ये सारी चीजें all of them fall into the category of data theft.
Financial losses, you already know this, right? And reputational damage, because if some email is going through through your personal email with some bad language, let's say, to somebody, then obviously it harms your reputation also. आपकी reputation पे भी, organization की reputation पे, institute की reputation पे, department की reputation पे भी इसका फर्क पड़ता है. So main thing is they try to steal the information first of all, or they try to steal the money, the attackers, and as a result, आपकी reputation उसमें damage होती है across many lines. Now, why emails? Because email is one of the most widely used communication medium in today's time. As an estimate, 4.3 billion users use emails. It could be Gmail, it could be Yahoo Mail, it could be institute email like amu.ac.in. But I mean, people who are in industry and institute, they use it. Everybody has it, right? And more than 90% of the cyber attacks actually start with the emails. Okay? They start with some fraud email, spam email, और चाहे वो मनी का लॉस हो, चाहे वो डेटा का लॉस हो, स्टार्टिंग मेनली उसकी एक बैड ईमेल या बैड लिंक से स्टार्ट. Now, why they are so easy to attack by the attackers? Because emails, they always use internet. आप internet के बगैर email send नहीं कर सकते हैं. So you have to be available on the internet, which means your data is flowing through the internet. ये एक बात है. और ज्यादातर सभी लोगों के पास आज के टाइम में, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, सबके पास ईमेल है. सो इट मेक्स देम इजी एंट्री पॉइंट. व्हाट डज दैट मीन? व्हेन एवरीबॉडी इज यूजिंग द ईमेल, ओके, इफ ओनली वन और टू पीपल वर यूजिंग ईमेल, तो वहां पे ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था. लेकिन जब ये सारे एम्प्लॉयज के पास है, नॉट एवरी एम्प्लॉय इज वेरी सेंसिटिव, नॉट एवरी एम्प्लॉय हैव strong passwords, not every student has a strong passwords. So in that case, attacking at least one of them becomes very easy. So that's why emails are common way of through which attackers attack the systems. So emails are both critical tool for communication. You cannot avoid them, but at the same time, वहाँ से attack होने के भी chances आपके काफी ज़्यादा बढ़ गए. So let's take a few examples. This example says that FBI, the intelligence agency of USA, it says that fake CEO email scam. It's the news of 2016. Fake CEO email scam ended up the company losing 2.3 billion overall. So what is this fake CEO email scam? जैसा आप थोड़ा सा नाम से भी समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ईमेल ऐसा लग रहा है कि कंपनी के सीईओ ने सेंड किया, राइट? लेकिन ये जो ईमेल प्राइमरीली आया है, इट केम फ्रॉम द अटैकर. और उस ईमेल में क्या है? उस ईमेल में भी कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि ये इंफॉर्मेशन वहां भेज दीजिए. व्हेन सीईओ सेज दैट, द कंपनी सीईओ, देन यू हैव टू डू इट, राइट? उस वजह से इस टाइप का लॉस कंपनीज ने फेस किया. इफ यू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन दैट इज मेंशन्ड हियर, दैट एफबीआई सेड दैट हैज बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज स्कैम्स हिटिंग एंटरप्राइज इन द लास्ट ईयर. और एक एस्टिमेट के हिसाब से रफली 2.3 बिलियन का नुकसान हुआ है. इट इज बाय द 2016. नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन 2025, और आई मीन 10 years have already passed. तो आप इसका स्केल भी आप समझ सकते हैं. लाइक नॉर्मल फिशिंग स्कैम्स, फिशिंग स्कैम का मतलब ये होता है कि आप कुछ और बन के ईमेल कर रहे हैं, so that is called phishing scam. These kind of attacks rely on highly believable messages. तो ऐसा लगता है मैसेज देख के और ईमेल देख के कि ये किसी न किसी रिलायबल इंसान ने भेजा है, सीईओ, मे बी सम हायर अथॉरिटी पर्सन. And then you rely on that, you follow the instruction mentioned in the email, because you do not check the email. और जब CEO पे कहता है, अर्जेंट कहते हैं कि नहीं आपको फॉरन करना है, तो उस केस में I mean you follow the instructions, as simple as that. So ठीक है. कॉमन थ्रेड कौन कौन से हो सकते हैं? There are many, but these 4-5 categories are very common. First, maybe in the earlier lectures आपने शायद इनको देखा भी होगा. एक चीज कहलाती है फिशिंग. तो उसका मेन मकसद ये होता है कि किसी तरह आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्रेडेंशियल्स, मींस लॉगिन पासवर्ड्स एक्सेट्रा,
ये आपसे ले लिया जाए. Business email compromise, it means you are sell fake invoices which you think they are real invoices. CEO fraud, the example we just saw. Maybe a category here, then you have ransomware and malware. We'll see what ransomware is, malware is. And email spoofing, it means that it seems like the email is coming from a reliable source, but it's not coming from a reliable source, right? So you are spoofing the emails, that's why we name email spoofing. इसके अलावा भी काफी तरीके के अटैक्स हैं जो काफी कॉमन है, but these 4 or 5 categories of attacks, they are extremely common on emails. Okay, so let's discuss each one of them one by one. So related to phishing, there is one example. In 2016, Democratic National Committee email लीक कहा जाता है इसको. तो इसमें हुआ ये कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनके जो emails हैं, they were stolen by 2 or more hackers. It seems like the attackers, they belong to Russian intelligence agency, and they were able to get the emails as well as their password. They logged into the system, and then they stole actually very sensitive or crucial information related to internal discussion within the Democratic Party, that whom we should consider for president, whom we should consider for, you know, some other post within the Democratic setup, Democratic Party setup. And when people came to know this information, and this information made public now every party does not want to disclose all of its information for obvious reasons. हर कोई पार्टी अपनी सारी information public के सामने नहीं रखना चाहती. They only tell what they think they are comfortable with. We all know this. तो लेकिन जब ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने आई, काफी डिस्कशन हुआ, तो उससे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो विनिंग चांसेस थे उसमें काफी ज्यादा फर्क आया. इनफैक्ट इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द रीजन why Donald Trump in 2016 won the election. We know that it's his second term, इससे पहले भी एक बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं. तो उसमें बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं. एक रीजन उसमें ये भी बताया जाता है कि जो ये इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, one because the attackers were able to get into the system from the Democratic Party through emails, and then they stole that information and made it public. Yeah, so this is one of the example of phishing where you are trying to steal confidential information and credentials also. Okay. Now think about this. Let's say we are here in Legal Muslim University, and all of a sudden, sometime you get email from these email IDs. So first one is bcamu@gmail.com, second is registrar.amu@gmail.com. And now how quick we are at looking at the emails. We usually say, acha, email aaya, and email is usually this kind of email. They are mentioned most urgent or time bound and reply very fast. These kind of instructions are given. And when we see this and we do not check every information there, we do not look at the email details the way we should look at them, the way we should verify them. So what our first reaction is, that is coming from the higher authority, it is urgent, so we have to follow, and we have to provide information as soon as possible. And this is what attackers do when they do phishing, or in fact even fake CO email and all. They try to use this kind of information where they keep the name very similar to what people are already communicating with. जो आप पहले से communication आमतौर पर करते ही हैं, उसी तरीके का जो information है वो email IDs जो है similar to that, people use that, right? और ज़्यादातर लोग not everybody falls for that, लेकिन काफी जो employees हैं which are not very tech savvy, जिनको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा कम होती है या अवेयर कम होते हैं, वो इन चीजों का जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी कॉमन टेक्निक
अच्छा, इसमें आप पता कैसे लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल ईमेल नहीं है या है? पहली बात तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है तो उसे एक दो बार वेरीफाई कर लीजिए, इवन आइदर बाय डायरेक्टली कॉलिंग द पीपल फ्रॉम विच द डेटा इज कमिंग और ईमेल इज कमिंग, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं कि इट इज कमिंग फ्रॉम @, राइट? वी नो दैट द ऑफिशियल ईमेल ऑफ PC here or register here should end with @amu.ac.in, कॉमन चीज होती है, होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे डोमेन नेम जिसे हम कहते हैं, पहले दो केसेस में वो जीमेल है, लास्ट के केस में वो yahoo.com है, तो उससे भी एक थोड़ा सा क्लू मिल जाता है आपको। इट माइट बी दैट दिस इज नॉट द राइट ईमेल एंड इट इज अ फिशिंग ईमेल व्हिच इज ट्राइंग टू आस्क मी फॉर सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है आइडेंटिफाई करने। नेक्स्ट, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। तो इसका मतलब मेनली ये होता है कि बिजनेसेस में या तो सीईओ की तरफ से ईमेल आ रहा है, yeah, I mean, there are fake invoices because in today's time we buy things online. Sometimes our family buy things online and the email is same, हमारा email उन्होंने भी इस्तेमाल किया हुआ होता है, so every other day you find some invoice coming in या refund का message आता है, उसमें कुछ attachments होते हैं and so on, और उस पर हम क्लिक कर लेते हैं without looking into too much details, right? So it can I mean, lead to very serious consequences. एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सो फेक ईमेल, इनवॉइस ईमेल्स attack on Google as well as Facebook. So what happened in 2013 and 2015? एक उनका नाम लिखा हुआ है, इवान दस नाम है उनका, सिचिलियन मैन। इन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा ईमेल कॉम्प्रोमाइज अटैक किया था, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, सही बीईसी स्कैम, जिसमें इन्होंने फ्रॉड किया गूगल के साथ भी और फेसबुक के साथ भी, और ओवरऑल 122 मिलियन इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया थ्रू फेक इनवॉइस ईमेल्स। नाउ हाउ डिड ही डू? व्हाट हैपेंड इज दिस दैट चाहे गूगल हो या फेसबुक या और भी कंपनीज, वो उस वक्त में एक ताइवान की हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी थी जो कंप्यूटर के पार्ट्स बनाते हैं, उसका नाम था क्वांटा कंप्यूटर। इट इज मेंशन इन द 4th लाइन हियर। तो so they were doing regular business with this company and every other time they buy something, this company will send some invoice और वो invoice जो है गूगल और फेसबुक जो है प्रोसेस कर ले। अब ये जो इम्पर्सनेटर हैं इवल दास, उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना कंट्री है लैटविया, वहां पे सेम नाम से, मींस क्वांटा कंप्यूटर के नाम से, एग्जैक्टली सेम नाम से ही कंपनी रजिस्टर कर दी, which anyone can do in any other country. अब जब उन्होंने कंपनी रजिस्टर कर ली तो उन्हें कंपनी के नाम से ईमेल भी मिल गया, मे बी quantacomputer.com, something of that sort। फिर उन्होंने फिशिंग ईमेल्स सेंड करना स्टार्ट किया गूगल को और फेसबुक को विद इनवॉइसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेटर्स that appear to be signed by executive from both companies, along with spooky emails designing to look like they originated from Quanta Computer, the original company, and from Google and Facebook themselves, right? So इसको इस तरीके से समझिए कि मानिए आपके पास किसी दिन you regularly receive emails from, let's say VC, and the common email is vcamu@amu.ac.in. Let's say this is the email. And you reply to that all the time. Now, all of a sudden, someday you receive email from exactly the same email ID, right? And then what? How will you know that it is not the right email? Okay? जब गूगल और फेसबुक क्वांटा कंप्यूटर की कंपनी की तरफ से जो साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे, उसमें हमेशा ही उनके इनवॉइस को क्लियर करते थे, पैसे सेंड करते थे। So the next time they found it, they said, okay, coming from the same company and all. So in this way, that impersonator was able to steal a lot of money from Google and Facebook, 122 million. And later he was caught, and that is a separate story. But overall, he did that, right? So this falls into the category of business email compromise, where sometimes you make it look like that you are a CEO, some
senior person, or you generate fake invoice emails from the same similar emails, almost similar emails, and your client does not know that, and they start sending you. This happens. Okay. Very common problem. Now, this is also very interesting. Ransomware and malware. हो सकता है आपने इसके बारे में कभी सुना. A very famous ransom email. देखिए ransomware क्या होता है? I hope you know the meaning of this term ransom. Ransom का मतलब होता है उगाही करना. मतलब किसी को जब आपने देखा होगा किडनैप कर लिया जाता है तो उसके बदले में जो पैसे लिए जाते हैं, that is called ransom, right? Ransom email, what they do is if you receive an email and there is a link or there is some file there, and somehow you click the file, then ransomware email, they install a software on your email, और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो आपके सिस्टम की जितने भी फाइल्स हैं, राइट, वो लॉक्ड हो जाती हैं, इनक्रिप्ट हो जाती हैं, उसमें पासवर्ड लग जाते हैं, सो ओके. नाउ थिंक अबाउट दैट. You have some files on which you work all the time. आपके पास कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर्स हैं, कुछ ड्राइव्स हैं जिसमें आप ऑलमोस्ट रोज ही काम करते हैं. ऑल ऑफ ए सडन आप एक दिन आए, आपके पास ईमेल आया, आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लिंक जो था उस पर क्लिक कर दिया, ओके. और जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपने देखा थोड़ी देर बाद सारी जो फाइल्स है आपकी वो या तो इनक्रिप्ट हो गई है, मीन्स यू कैन नॉट रीड उसमें ओरिजिनली लिखा हुआ है क्या है, या फिर उन सब में पासवर्ड protected हो गए, means you should know the password in order to open them. Okay? जाहिर सी बात, अगर वो सेंसिटिव फाइल्स हैं जिनमें आप रोज काम कर सकते हैं, करते हैं, you really need them. फिर जब ये लॉकिंग हो जाती है, इंक्रिप्शन हो जाता है, आपकी जो फाइल्स हैं वो लॉक हो जाती है, तब आपको फिर ईमेल आता है कि आपकी सारी फाइल लॉक हो चुकी हैं. अगर आप इन्हें दोबारा ओपन करवाना चाहते हैं, then you should pay this much amount of money and so on. ठीक है, तो उनको वो पैसे देने, दैट्स व्हाई द नेम रैनसमवेयर. इस तरीके से आपकी फाइल्स को उन्होंने एक तरीके से किडनैप कर लिया और एज अ रिजल्ट आपको पैसे देने हैं, और जब आप उनको पैसे दे देते हैं तब वो आपकी फाइल को फिर से डीक्रिप्ट करते हैं या उनके पासवर्ड को रिमूव. तो and once again it commonly starts from email. So look at this Locky ransomware email. Locky ransomware continues to be distributed through malicious email attachments, right? Some kind of file. With recent campaign observed in May 2025, means abhi recent ki hi baat hai, using social engineering tactics. We'll see what social engineering tactics are to trick users into opening attachments, right? We are trying to open the attachments. Now, these attacks often involve spoof brand like Herbalife and so on, or fake deliveries or fake invoice. We have seen that. All bundled with archive files containing malicious VB script files. VB script files commonly used to install the software that download the ransomware, that particular software which includes software. Okay, so इस टाइप के ईमेल जो स्टार्टिंग होती है इस टाइप की प्रॉब्लम्स की, वो भी आपके ईमेल से ही ईमेल स्टार्ट. यहाँ पे उसका प्रोसेस दिखाया हुआ है. अराइवल एंड इंस्टॉलेशन, सो इन्फेक्शन चेंज ऑफ दिस ransomware campaign starts with the social engineered emails. Threat actors use social engineered emails. उसमें कुछ उन्होंने ऐसी चीजें डाली हुई थी जिससे आपको लगे कि ओरिजिनल ईमेल है. It was an attachment, usually in the form of zip file or RAR file, जो compressed file होती है. And once people did that, it installed the ransomware on their system. और जो entire process है उसको भी mention. Email spoofing. Email spoofing is also very common, in which you work. I mean, it seems like the email is coming very reliably from a very reliable source, but when you try to open it, right, it seems like that everything is fine coming from a reliable email. लेकिन जैसे ही आप उसको ईमेल आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि ये तो फेक यूजर्स है. सो और इन कोविड के टाइम में लोगों ने उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है. जैसे आप इस केस में भी देख सकते हैं कि इन द टाइम ऑफ COVID-19 pandemic, many people received email from the WHO
because WHO at that time was sending lots of information. Okay, so many people thought that the information is coming from the this WHO regarding some guidelines related to COVID-19 pandemic. But as you can imagine, it was the case of email spoofing, where the information was not coming from WHO, and it contained, those emails contain very uh, you know suspicious attachments, malicious attachments, ransomwares, and so on, fake websites, you name it, and they try to steal the credentials. Now, at that time, we have all seen that everybody was in the panic mode. कोई घबराया हुआ था क्या है क्या नहीं है, तो लोग बहुत in with curiosity they used to wait for WHO emails कि WHO की तरफ से कुछ email आ रहा है या आने वाला है related to guidelines and what is the current status of COVID. और इस type के email, because people were in desperate situation, people tried to make use of them as much as possible, but उसमें भी hackers ने इसमें email spoofing करके बहुत सारे fake और malicious email send किया. Once again, the idea was same, either to steal the data or to steal the information, financial information, and so on. Okay? And email spoofing once again means that it seems like that email is coming from a trusted source. So the email would look like Health Ministry, WHO, @ something something, and it seems like it's coming from WHO and so on. Now, some common things about type of malicious emails. क्या वो common चीजें होती हैं जो अक्सर emails में आपको नजर आएगी? पहली बात आप ये देखेंगे जो addresses होते हैं, they are very similar to the official people. Either domain name is different a little bit, right? So rather @amu.ac.in, sometimes it is gmail.com and yahoo.com. This is one of the clues जिससे आप पता लगा सकते हैं email जो है वो ठीक नहीं है. Second is spelling थोड़ी सी slightly change कर दी जाती है, right? So for example BC AMU, तो A को 2 बार लिख दिया या U को 2 बार लिख दिया. You do not see that when you read the email, when you read the message. तो इस टाइप की slight misspellings ये काफी common आपको दिखेंगे इस टाइप में. अर्जेंसी ज्यादातर होती है, इट जस्ट रिटन के अगर आपने ये नहीं किया तो आपका इतना लॉस हो जाएगा, या यू विल लूज दिस वेरी नाइस ऑफर, एक के साथ एक फ्री है, 90% ऑफ है, something of the sort. Because they do not want you to give too much time to verify आपको नहीं करवाने देना चाहते हैं और आपको बहुत ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं. Urgency is a common phenomenon in these type of malicious emails, right? लिंक्स होते हैं disguised as legitimate URLs. So जब आप URL उसमें कई बार इस टाइप की emails में links होते हैं, तो उसमें URLs होते हैं. URLs means clickable links. When you look at the URL, it looks fine, but when you click to them, it leads to you a website which is not the original website. और कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है click here, something like that, और here blue होता है, means here link होता है. लेकिन क्योंकि अगर आपको सीधा URL मेंशन होगा, so you might understand, okay, इस कंपनी का URL है या उस कंपनी का URL है, for example amazon.com or something like that. लेकिन अगर आपको सिर्फ लिंक लिखा होगा click here and here is blue and that blue takes you to some other website, तो usually हम लोग चेक नहीं करते हैं कि URL क्या है. हम जैसे देखते हैं click here, let me click here if it is coming from a legitimate person, sender. Okay, वो आपको लिंक ज्यादातर URL आपको लिंक देखना चाहते हैं, which is provided freely. अटैचमेंट्स आप देखेंगे थोड़े से अनएक्सपेक्टेड होते हैं. अनएक्सपेक्टेड यार मींस कॉमन अटैचमेंट्स आर होते हैं. सबसे कॉमन अटैचमेंट ईमेल में क्या होता है, या तो आप पीडीएफ फाइल भेज रहे होते हैं या वर्ड फाइल भेजते हैं. समटाइम्स यू आल्सो सेंड एक्सेल फाइल, समटाइम्स यू सेंड सम इमेजेस, तो जेपीजी फाइल हो सकती है, .png फाइल्स होती हैं. इस टाइप के जो अटैचमेंट्स होते हैं दे आर कॉमन अटैचमेंट. But when you see attachment as .exe file or .zip file, because in order to run the code, they try to send these files, .exe file, because वो executable होती है, और install हो जाती है, zip file, right?
इन फैक्ट इसलिए यहाँ पे जीमेल में कम से कम एक चेक और बैलेंस है कि आप एग्जीक्यूटिबल फाइल सेंड नहीं कर सकते. You cannot send .exe file. If you try, you can try that. If you will try to attach .exe file as attachment, then it will say it is not a valid file. It is not the legitimate file that you can send, because usually .exe and .zip files are used for malicious software installation and so on, especially ransomware kind of scenarios. Now, some technical details. If you do not understand these things, that is completely fine. But the point is, ऐसा नहीं है कि ईमेल से कोई कुछ भी भेज सकता है और उसमें कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है. बैकग्राउंड में बहुत सारे कोड्स एंड प्रोग्राम्स एंड सॉफ्ट सिक्योरिटी mechanism, they work behind the scene. We do not see them often, but they are there, right? And they try to minimize the harm already. लेकिन इसके बाद भी आप तक emails आ सकते हैं and so on. So common email protocols that are used to send the email, one of them is called SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, and it is used for sending the email from source to destination. Then there is POP3 email, Post Office Protocol, version 3 we call it. When your email has reached to the server, let's say Google server or something, then this protocol is used to download the server, and each of these protocol, by the way, run their own security mechanism. तो जो SMTP है, जब वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ईमेल सेंड करता है, तो वहाँ भी अपने लेवल पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है. जो POP3 है, जब आप डाउनलोड करते हैं सर्वर से ईमेल एट योर सिस्टम, तभी वहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म है. और एक होता है IMAP protocol, which is Internet Message Access Protocol. It is used to sync email across devices. तो आप अगर जीमेल पे लॉग इन करके कंप्यूटर से करेंगे तब भी आपको वही इंफॉर्मेशन दिखाई देगी. अगर आप अपने मोबाइल से ईमेल करके ईमेल चेक करेंगे तब भी आपको वही इंफॉर्मेशन दिखाई देगी. एक ऐप होती है आउटलुक, उसमें भी आप अपने ईमेल्स को लोकली डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम पे, अपने लोकल सिस्टम पर, उसे इंटरनेट के बगैर भी देख सकते हैं. So for that, this protocol is used, and once again, here also IMP run its own security mechanism. So there are at many levels where security is checked, but it is checked rather in the technical terms. So what is the sender address? And if it is a valid address like vcamu@gmail.com, there is nothing wrong about this, right? तो उस केस में ये उसको पास होने देता है, but some other cases which is obviously coming from a malicious user, they try to stop, right? एक ये पुराने सिस्टम्स में थोड़ा सा इंक्रिप्शन तब नहीं था. At that time, earlier email, they did not use encryption. Encryption means your message is changed. तो अगर आप ABC लिख रहे हैं तो वो ABC नहीं जाता है, वो कोडेड फॉर्म में जाता है, जिसे बीच में अगर कोई है तो उसे पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए. इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहते हैं. पहले के प्रोटोकॉल्स में इंक्रिप्शन कम था या बहुत लिमिटेड था. आज के टाइम में along with existing protocol, many security layers are used. One of the layer is called transport layer security. Another one is called end-to-end encryption. शायद आपने लोगों ने नाम भी सुना हो. जो WhatsApp के messages होते हैं, they are secured by end-to-end encryption scheme, right? So, and there are many email authentication processes like sender policy framework, like domain keys, identified email, domain-based message authentication, reporting and confirmance, DMARC. And I mean, so the point here is that even though we get bad emails from the malicious user, there is a lot of algorithms and protocols that work behind the scene in order to make the minimum damage to the user. ठीक है, अभी भी बहुत हद तक चेकिंग होती है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के सिस्टम्स में emails में, whether it is Gmail or something else, एक spam email हो, spam email. तो आप spam एक फोल्डर होता है, यानी जो भी emails useless होते हैं या जिनमें ये चांस होता है कि ये मीनिंगफुल मैसेज नहीं है, let's say related to lottery or you have won this thing or that thing, और कुछ इस तरीके का कि आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ दिस थिंग, और मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे कोई उसका केयर टेकर चाहिए, सो ऑन.
इस टाइप के बहुत मैसेजेस आपके पास आते रहते हैं। अगर आप अपना स्पैम फोल्डर खोल के देखेंगे तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो स्पैम में जा रहे हैं ईमेल, दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू ऑल दीज फ्रेमवर्क्स, which try to check them, try to identify them, and to know what are the chances that it is a bad email, malicious email, and they knowingly put that in the spam folder. And all this process is done automatically without you knowing it. और आप अगर चेक करेंगे अपना स्पैम फोल्डर तो आप देखेंगे कि वाकई जो ईमेल स्पैम में आए हैं वो वाकई यूजलेस तरीके के ही हैं, आपको बहुत ज्यादा उनकी इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक। तो ये जितने भी ईमेल ऑथेंटिकेशन है ये बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट इन डिटेल, बट लेट्स से सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, व्हाट इट डज, इट चेक्स द आईपी विद द ईमेल। ये आईपी चेक करता है और ईमेल चेक करता है। आप पता होगा कोई भी डिवाइस जब आप मोबाइल है या कंप्यूटर है, जब आप उसे कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, तो इट कंटेन्स एन आईपी एड्रेस, राइट, ठीक है। अब मानिए कि आपने एक ईमेल सेंड किया फ्रॉम लेट्स से माय ईमेल mohammadnadeem@amu.ec.in, राइट। तो अगर हम इसको डिकोड करें कि mohammadnadeem@amu.ec.in, सो व्हाट इज दैट? @AMU means Aligarh Muslim University. .ac is commonly used for academic institutions. So .ac in here represents IN, in here represents India, ठीक है। तो एक तरीके का डोमेन नेम आपको पूरी चीज बता रहा है कि मोहम्मद नदीम है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, और ये आपका इंडिया में है, ये इंस्टीट्यूशन इंडिया, ठीक। सो दैट इज द होल इंफॉर्मेशन इन आवर। Now at the same time you check that IP is also registered in India. कई बार ऐसा होता है कि कोई मेरी ईमेल आईडी इस्तेमाल कर सकता है यूजिंग डिफरेंट मीन्स, लेकिन उसका आईपी जो है वो लेट्स से किसी दूसरे कंट्री का है, लेट्स से साउथ अफ्रीका का ऐसा। सो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क SPF, it tries to check that the email and the IP address, do they match? Are they coming from the same area, same country maybe, right? And if there is an this spam, there is a mismatch between email ID and this IP address, then SPS is failed, and in that case email will not be delivered, okay. Similarly, domain keys identified email, it also tries digital signature of both sender and receiver. So once again a technical part, but इस टाइप के चेक्स लगे हुए हैं ऑलरेडी आपकी ईमेल सर्विसेज में जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, what are the solutions? So far we talked about what are the different problems with the emails, कैसे से प्रॉब्लम हो सकती है and so on. By the way, let me show you once कि ये जो हम लोग ईमेल्स भेजे हैं ये कहाँ पे दिखाई देते हैं, कैसे काम करते हैं, so on, just to give you a hint कि चीजें कैसे होती हैं। Off for a moment so that you can check at your own and also sometimes. So let's say this is my email, I'm using this Gmail, और आप इस तरीके के ईमेल आते ही हैं, आपने भी इस्तेमाल किए ही होंगे and so on, right? Many emails are there. So let's say I already sent this email sometimes back. तो अगर आप देख सकते हैं कि ये I hope it is visible. So let me zoom this in a little bit so that you can check. So I use two IDs. One is my Gmail ID, another one is my regular AMU ID. AMU.ac.in. अगर मैं इसमें ओपन करता हूँ तो मुझे दिखता है कि mnadeem.cs@amu.ac.in। तो ये इंफॉर्मेशन आपको सीधे सीधे यहाँ पे नजर आ रही है कि सेंडर कौन है and who's the receiver and so on, date and time and so on. देखिए mailed by amu.ac and signed by. Now signed by is important. It means this part, domain keys identified email. Hello? Yes. Sir, your screen is not showing. Only your photo is showing on the screen. Is this the case? I mean, in my own mobile phone, I can see my screen. So, किसी को screen दिखाई नहीं दे रही है? Please verify.
और लोग भी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर, स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल है। शायद आपने कोई दूसरा पिन कर लिया होगा, एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखिए प्लीज, क्योंकि मुझे भी अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने मोबाइल से भी लॉग इन किया हुआ है सर। थोड़ा सा आप ट्राई करके देखिए। है तो मैं आपसे बता रहा था कि इसमें काफी सारी चीजें, अब आप देखिए इसमें यहाँ पे जब आप जाएंगे दैट इज शो ओरिजिनल, राइट, शो ओरिजिनल। जब आप शो ओरिजिनल कहेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक्चुअली ओरिजिनल ईमेल कुछ इस तरीके का होता है। इट डज लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली, राइट, और बहुत सारी मैसेज पासिंग एंड मैनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म। बाय द वे यू कैन सी दैट ओरिजिनल मैसेज हाउ आर यू एक्सप्लेन। और ये देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आईडी, दिस इज द होल आईडी, लाइक कब भेजा गया, किसने भेजा। यू सी दैट एसपीएफ, राइट, एसपीएफ पास। ना पास मीन्स कि जिस आईपी एड्रेस से ये ईमेल आया है और जो ये ईमेल का जो डोमेन नेम है, दे बोथ है, आई मीन आईपी भी रजिस्टर्ड है और ये ईमेल भी उसी जगह से रजिस्टर्ड है। एसपीएफ इज पास। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो amu.ac.in से हुआ है, थर्ड पार्टी से, सो दिस स्टेटस इज आल्सो पास। और आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, डीएमआरसी इज आल्सो पास। सो what I'm trying to show is there are many layers of securities that takes place in email, but they take care of the internal consistency of the email. But there are many external, जैसे अगर आपने सेम जगह से ईमेल भेजा है, आईपी भी पास हो गया, लेकिन आपने malicious intent से भेजा है, कोई चीज क्लिक कराने के लिए भेजा है, so that is something the security mechanism they do not check. Okay? So let's go back to our original slide. So these are some of the mechanisms that are there in our email systems. Now, what can we do? There are many things that we can try doing. First thing is there are some tools, AI and ML powered tools, that can further filter your emails, right? So actually what these tools do is you sit manually और आप इनको बताते हैं कि देखिए ये ईमेल खराब था, ये ईमेल खराब था, ये ईमेल खराब था, ये ठीक था, ये खराब था. I mean, you first try to give them what were the wrong emails and what were the right emails, and if you do that, then the email systems or these systems would know कि अच्छा किस टाइप के emails जो है आप प्रेफर करते हैं आए आपके पास और किस टाइप के email आप चाहते हैं आपके पास नहीं है. ठीक, तो इस टाइप के टूल्स हैं आज की डेट में, AI ML बेस्ड टूल्स, बट यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस इसको बाय करती हैं और वो अपने जो सर्वर्स होते हैं उनमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. आप एंटीवायरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन. सो दे ट्राई टू डिटेक्ट सस्पिशियस अटैचमेंट्स before execution. So in many cases when you, let's say you get a message with .zip file or with .exe file, then antivirus will tell you. In fact, when you attach a zip file on the Google, your Gmail, and you try to send that through the Gmail, then Gmail will internally run an antivirus to check whether that zip file is right or wrong. It does not. Does it contain some malicious code or malicious information, or that attachment is completely fine? तो इस टाइप के एंटीवायरसेस भी अवेलेबल है. बहुत से AI बेस्ड टूल भी हैं जो आपको जैसे डार्क ट्रेस एक AI टूल है जो आपको कुछ हद तक बता देता है कि ये ईमेल ठीक नहीं लग रहा है. It does not look good and with decent accuracy. So, जहाँ पे भी देखिए हम लोगों का डेली यूज का काम है, काफी कॉमन ईमेल आते हैं, यूजफुल भी आते हैं, नहीं भी आते हैं, दैट इज वन थिंग दैट वी कैन बियर सम हार्म इट इज. लेकिन जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती है, लेट्स से देयर इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, देयर इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेट्स से DRDO, मिलिट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और सम साइंस लैब रिलेटेड, यू नो, these organizations which work in critical domains और डिफेंस में जो काम करती है, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे इस टाइप के टूल्स को इंस्टॉल करना, उनसे आइडेंटिफाई करना और जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी टूल्स है दे आर पेड टूल्स और दे हैव टू पे फॉर देम. सो क्रिटिकल एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा बन रहा है. ठीक है. डेटा लॉस प्रिवेंशन, आप सेंसिटिव डेटा मत दीजिए अपना कभी भी ईमेल के थ्रू.
प्रोटेक्टेड फॉर्म में भेजिए, डायरेक्टली बता दीजिए। लेकिन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं या सीवीसीज होते हैं डेबिट कार्ड के, या पासवर्ड्स होते हैं, उनको आपको ईमेल से, इवन व्हाट्सएप पे भी शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको आप डायरेक्टली बता दीजिए, दैट इज मच बेटर देन सेंडिंग इट। क्योंकि देखिए, जो इन्फॉर्मेशन एक बार आपने टाइप करके भेज दी, इट रिमेन्स देयर इवन इफ समबडी डिलीट्स दैट। ठीक है, आज के टाइम में टूल्स अवेलेबल है, अगर आप अपने सिस्टम से कोई चीज डिलीट भी कर देते हैं, इवन इफ यू परमानेंटली डिलीट दैट, ठीक है, जो डिजिटल फॉरेंसिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे जो भी डिलीट आपने किया उसे बहुत आसानी से फैच किया जा सकता है। देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक दिस, पेड होते हैं ज्यादातर, जो अच्छा काम करते हैं, बट whatever you have mentioned, whatever sensitive information you have mentioned, it is not your property anymore. It is the property of the organization which of which you are using the service. Either it is Google through Gmail or Facebook if you are using WhatsApp, because WhatsApp ultimately handled by Meta. Meta is the parent company of Facebook. तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जितना अवॉइड कर सकते, अपने पर्सनल फोटोज मत डालिए प्लीज इन वेबसाइट्स पे, ईमेल्स पे, व्हाट्सएप पे, डोंट यूज दैम। सोशल मीडिया पे डोंट यूज योर पर्सनल ईमेल, जिन्हें कोई भी आसानी से मॉर्फ कर सकता है, चेंज कर सकता है, आपको किसी सिचुएशन में दिखा सकता है जो आपने नहीं किया था। देयर आर टूल्स लाइक दिस, maybe you are holding a gun in the picture, you never hold a gun, you never held a gun in your entire life, but since you are sharing your images on these social media websites, people can easily download them and change them for whatever purpose you like. एक लास्ट इसमें जो है वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA. Maybe you are already familiar with that. जावेद सर, आप म्यूट कर सकते हैं प्लीज। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होता है, आपको पता होगा कि जब भी आपके जीमेल पे कोई लॉगिन करता है या आप लॉगिन करते हैं, तो एक होता है यू नॉर्मली टाइप पासवर्ड, ओके, एंड दैट पासवर्ड वर्क्स एज अ प्रोटेक्शन, बट देयर इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी, जिसे हम कहते हैं कि पासवर्ड भी आएगा, फिर उसके बाद आपके मोबाइल पे शायद OTP भी आएगा जो रजिस्टर्ड हो, या यस नो क्लिक करने के लिए आता है। Sometimes you also find they ask you to type a number. Maybe you have seen that thing, right? So the multiple steps you are using to protect your Gmail or email, the better it is. I hope all of you must have done that. I use multi-factor authentication all the time, right? And you have to set this up. इसको आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, एक बार आप कर देंगे फिर कभी भी किसी भी दूसरी डिवाइस पर लॉगिन नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमेशा आपकी तरफ से ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मे बी मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी यूजिंग इट, सो लेट्स से this is login. Let me private window. So let's say I want to. So private window means I'm trying to log in onto my Gmail using a different device, some new device, or somebody else is trying to do that, and somehow they know the password or they can try the password, right? So this is my email, then an email type here, then I could put the password here. So usually password डालने के बाद लॉगिन हो जाता है, बट आप देखेंगे जब मैं लॉगिन किया तो इसने ये भी आ रहा है मेरे पास कि नहीं ऐसे लॉगिन नहीं हो पाएगा, आपका जो ये मोबाइल जो आपने रजिस्टर किया हुआ है उसमें पहले टैप यस पे प्रेस करिए तभी आपका लॉगिन हो पाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, तो जैसे मैं करता हूँ अपने मोबाइल से यस दिस इज मी हु आर ट्राइंग टू लॉग इन, तो वो करने के बाद मेरा लॉगिन हो जाए। ठीक, तो इसमें एक फर्दर लेयर ये भी है कि मैं अपने जो मोबाइल है उसका भी इस्तेमाल करें। सो पासवर्ड इज नॉट इनफ, apart from that I am also using OTP kind of mobile as well, and I hope you already use that. तो इस टाइप के मल्टीपल को करने से भी फायदा हो जाता है। आप इसे अगर आपको पता हो इसे कैसे करना है तो यहाँ पे सेटिंग होती है, सेटिंग है। कभी भी आप अपने ईमेल के आप सेटिंग में जाके देखिएगा, सी ऑल सेटिंग्स,
या सो दिस इज सेटिंग। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं किस चीज को ऑन करना है, किस चीज को ऑफ करना है। उसमें से एक है आपका पासवर्ड फिल्टर एंड ब्लॉक्स, signature and all, configure signatures, inbox, accounts, a password. You can recovery options. If you forget the password, then you can set how you will recover your from password, right? You can add your another email address. So sometimes if somebody changes your password, let's say, then you can further log in using this another email. तो इस टाइप के बहुत सारे इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो अवेलेबल है। I'm looking for that new stuff of which is the photo. I could not find it right now, so it's trace there. Okay, I will let you know after checking it out. But there is an option जब आप उसको click कर लेते हैं तो आपके तो multiple multi-factor authentication है वो on हो जाता है. So every other time they changes the GUI a little bit. So I'm not able to find it. It's right here somewhere. Okay, maybe some of the time, right? But try to turn that option on, which is called multi-factor authentication. Right? So these are some of the things that you can do in order to secure your image. Let's move forward. Now, most of the times it has been identified that the technology we are using is good enough still to secure our email systems and all. Majority of the time when there is a cyber attack or some attacker is attacking your emails, most of the times, as mentioned here, 90% of the times, in fact, it is due to human error. So we download something, we click on some link, or maybe we reply to that email we should not have replied there. इस टाइप की गलती हम लोग अक्सर करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ईमेल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो जो कॉमन, जैसे मैंने पहले भी आप लोग से डिस्कस किया, जो कॉमन टैक्टिक्स हैं जो अटैकर्स इस्तेमाल करते हैं वो ये कि they try to build a trust that the sender is somebody you already know. They fear urgency, your account will be suspended, और आपका जो SBI में अकाउंट है वो क्लोज होने वाला है, आपका डेबिट कार्ड है वो दिस एंड दैट, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं जिस वजह से आप ऑल ऑफ सडन लगता है कि I should reply. So there is a sense of urgency there. And sometimes there is curiosity कि आपको ये ऑफर दिया जा रहा है 80% off, 90% off, something even 100% off this time. Unexpected invoices होते हैं, तो ये इसकी वजह से we often tend to look at those emails. तो सोशल इंजीनियरिंग एक बार टर्म आया था काफी ज्यादा। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि लोगों के जो सोशल बिहेवियर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करें। तो जैसे अर्जेंसी, जैसे मैंने आपसे बताया, अथॉरिटी कमिंग फ्रॉम सीईओ, रिवॉर्ड्स अगर आप किसी को देते हैं लोग, या थ्रेट किसी को देते हैं, तो ये कॉमन सोशल टर्म्स हैं जिन पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन वी थिंक लेस व्हेनेवर वी सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये इस टाइप के सोशल इंजीनियर, एंड बियॉन्ड दैट इवन आपके बेटे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, या आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, इट इज हियर एंड देयर, इस मतलब अर्जेंसी आपको या किसी तरीके का थ्रेट या रिवॉर्ड, इस टाइप की इंफॉर्मेशन अक्सर इन टाइप की ईमेल्स में हो सकती है। आज जो बहुत से लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, दे ऑल ऑफ अ सडन गेट ए जॉब नोटिफिकेशन, कांग्रेचुलेशन यू आर हायर्ड। आपको कुछ नहीं करना है, बस रजिस्ट्रेशन करना है जिसकी फीस 500 रुपये है। तो आपको लगा अच्छा जॉब मेरी हो ही गई है, 500 रुपये का लिए, लेट्स ट्राई, हो सकता है वाकई सही ईमेल हो। लेकिन आप सोचिए अगर उसने 10,000 लोगों से 500 रुपये कलेक्ट कर लिए हैं, देन इट इज़ एन ईजी 5 लाख रुपए मनी। तो लेकिन पीपल आर डेस्परेट फॉर द जॉब्स, तो वो फिर उसको कम, इवन इफ दे डू नॉट रिलाई ऑन देम कम्प्लीटली, कहते हैं ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं, 500 रुपए की तो बात ही है, तो कॉल हो रही है,
इस टाइप की सोशल इंजीनियरिंग इस टाइप की ईमेल्स में होती है। सीईओ इंपर्सनेशन हम देख ही चुके हैं, एंड फेक इनवॉइसेस और पेमेंट रिडायरेक्शन, तो इस टाइप की चीजें भी काफी। Now let's move to the next part, which is एक ही एग्जाम्पल है, we'll just go through that. तो इसमें हुआ है 2015 में एक कंपनी है यूबिक्विटी नेटवर्क्स, यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, fell victim to sophisticated phishing attack that resulted in the loss of 46 million roughly. The attack involved criminals impersonating that company's CEO and lawyer using fraudulent email to trick the chief accounting officer. तो ऐसा महसूस हुआ चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर को कि सीईओ की तरफ से मेल आया है और आपको फॉरेन ऑफशोर अकाउंट्स है कुछ, उसमें इतना पैसा भेजना है. द चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर डिड नॉट थिंक टू मच and just send the email. Probably he was getting these kind of emails from the original CEO also. Before that, उस टाइप के मैसेज शायद जो मेन CEO ओरिजिनल CEO उनकी तरफ से भी आती ही होंगी. Using that social engineering thing, the attacker attacked him through the email and he transferred the money. Okay. So इस टाइप के, I mean, you just look at the internet and you will find tons of information and these kind of scams using emails. Right? No problem. So what can be done? So there are some gaps related to user awareness. Some, not all, but some people are not very aware of these kind of tricks. People often cannot recognize subtle phishing cues. उन्हें पता नहीं लग पाता है कि वाकई ये फिशिंग रिलेटेड ईमेल है. वो बहुत ही ज़्यादा वीक पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं just for because they do not want to remember complex passwords. And there are password to almost every app nowadays. WhatsApp का भी पासवर्ड है, फोन का पासवर्ड है, Gmail का पासवर्ड है, so on. So they try to use very weak password. This is another thing, and they forward suspicious attachments without checking. It's a very common way where people show. And the lesson that we can take, that technology alone isn't enough. People have to be aware about these kind of malicious attacks that can take place in their presence. So some practices that we can rely on, they are not the full proof that you will never fall victim to an email phishing attack. But कुछ चीजें जिनका आप ध्यान रख सकते हैं. The first rule that is given is think before you click. थोड़ा सा लिंक है उनके ऊपर जाके देख लीजिए पहले कि इस लिंक का URL क्या है, क्या वो मीनिंगफुल वही URL है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, या उस लिंक में जो URL दिया हुआ है इट इज समथिंग नॉट सो गुड URL. थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए सेंडर की आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने की, स्पेशली अगर ईमेल आपसे कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, फंड ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है, तो सेंडर की आइडेंटिटी जो है वो आप इंश्योर करने की कोशिश करिए. बिवेयर ऑफ लुकलाइक डोमेन्स, जो एक जैसे डोमेन नजर आ रहे हो तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए. स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, जो कम से कम आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, जो जैसे आप ऑफिशियल ईमेल इस्तेमाल करते हैं, ऑफिशियल ईमेल इज योर आइडेंटिटी ईमेल, राइट. तो उस टाइप की जगहों पे कम से कम आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग लेंथी लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए और टाइम टू टाइम उनको बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है 2-3 साल हो जाते हैं और हम लोगों का पासवर्ड वही रहता है जो बहुत, उसको अवॉइड करना चाहिए. लोगों कम से कम क्रिटिकल एप्लीकेशन में तो हम ये कर ही सकते हैं, हर जगह नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज समथिंग. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA जो होता है उसको आप टर्न ऑन करिए अपने ईमेल अकाउंट्स पे. इसका मतलब ये है कि जब भी किसी नई डिवाइस पे आप लॉग इन करेंगे तो सिर्फ पासवर्ड ही काफी नहीं होगा, वो आपसे OTP टाइप ऑफ थिंग विल आल्सो बी आस्क्ड ऑन योर मोबाइल फोन्स. वंस यू वेरीफाई देन ओनली यू कैन लॉग इन इनटू दैट न्यू सिस्टम. सो इससे एक लेयर आपकी और बढ़ जाती है. और ये भी एक अच्छी चीज है कि जब भी आपको सस्पिशियस ईमेल मिल है तो उनको इग्नोर मत करिए, उनको रिपोर्ट भी करिए, राइट. सो रिपोर्टिंग क्या होती है, लेट्स सी दिस. What do we mean by report the suspicious email? Usually means that, let's say if I receive some email like this, let's say this,
और आपको लग रहा है कि ये ईमेल जो है फेक ईमेल है फॉर वट एवर रीजन यू हैव आइडेंटिफाइड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, राइट? रिपोर्ट फिशिंग, report spam. Spam का मतलब है कि it is not the useful email. These kind of emails, when you find them next time, put that into the spam folder. Phishing का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, मुझे काफी श्योर हूँ मैं कि ये मेरे ऊपर अटैक हुआ है। तो इससे भी क्या होता है, जो जीमेल या जितने भी ईमेल सिस्टम्स हैं, इनके पीछे जो एल्गोरिथम काम करती हैं, एआई रिलेटेड एल्गोरिथम्स एंड ऑल, दे लर्न फ्रॉम दिस बिहेवियर। अच्छा, फिशिंग ईमेल इस तरीके के होते हैं, एंड दे try to incorporate and mark those emails and inform the users next time such emails are received. So इससे हमारा जो इनबिल्ट सिस्टम है, ईमेल का जो सिस्टम है, वो और भी स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज नाउ दे नो कि इस टाइप से फिशिंग ईमेल्स आ सकते हैं हमारे पास। These are some of the things that we can do. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि SPF, DKIM जो हम लोगों ने भी देखा था, अपने ईमेल ओपन करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। सिक्योर गेटवेज बनाए जाए फॉर फिल्टरिंग। जैसे होता है कि हमारे AMU के सर्वर से हमारे जितने भी ईमेल हैं वो AMU के सर्वर से आते हैं और AMU के सर्वर से ही जाते हैं। तो AMU के सर्वर पे हम एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो हमें फर्दर फिल्टर करने में हेल्प करें when emails are coming from the outside world, and even if some email is going from inside the university through that server, उस पे भी हम check and balances, extra check and balances लगा सकते हैं, but this is not for us, this is primarily at the organizational level। और थोड़ा सा टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इस टाइप के फिशिंग अटैक होते रहते हैं, आ जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। तो इस टाइप की कंपेनिंग भी जरूरी। सॉरी, फिर अगर फिशिंग अटैक हो ही जाता है, मानिए बहुत आप लोगों ने कोशिश कर ली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, तो एक SOP भी बनना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि उस केस में इंसिडेंट जो है हमको कैसे बिहेव करना है। जस्ट फॉर अ मोमेंट, आई विल बी राइट बैक। So chairperson came in between, so I was talking about. So let's continue. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और शेयर करते हैं आपके साथ, then we'll stop for today। तो मैं यहाँ पे था कि if there is actually some incident takes place related to phishing, तो उस केस में SOP क्या होना चाहिए? So first of all, you should report that suspicious activity, right? जिन ईमेल पे वो आया है या जिस सिस्टम पे वो ईमेल ओपन हुआ था, बिकॉज इट कुड बी डाउनलोडेबल अटैचमेंट, डाउनलोड हो क्या प्रोसेस होता है, इंस्टॉल हो ही गया है, तो उस सिस्टम को और उस अकाउंट को अब इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? जिस ईमेल जगह से ईमेल आया था, उस डोमेन नेम लाइक @amu.ac.in, and that IP should also be blocked and informed to the authority। जो भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे स्टेक होल्डर हो, मींस whoever people are involved or are affected by this phishing attack, they should be informed so that they can take precautionary measures। And further, since the phishing took place, it is also a sign that our system is not robust enough, right? So we need to improve our defenses by installing extra software at the local server, as I discussed with you। इस टाइप के हमें regulations फिर उसमें
improve करने चाहिए, so that next time we do not see a phishing attack, or at least similar phishing attack तो कम से कम नहीं हो, इतना तो आपको कोशिश करनी चाहिए. ये एक लिंक है in order to sensitize people regarding how the phishing takes place. तो देखिए गूगल ने एक फिशिंग क्विज बनाया हुआ है जिसमें वो अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि फिशिंग में ईमेल किस तरीके के नजर आते हैं, so on. So let's try to do 1 and 2 instances of this link. इसे आप अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं. देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, so on. देखिए divided by jigsaw, it's a Google phishing email. I hope all of you can see this. Let's start to take the quiz. Now it is about how informed I am, how aware I am related to the phishing attacks. Right? Let's see this. So my name is emails. Email is get started. All right. So I have to look at this document. Right? And I got this email from duke.jason800@gmail.com. तो मुझे ये पता करने की कोशिश करनी है by look and feel of this कि ये जो अटैक है क्या ये फिशिंग अटैक है मेरे ऊपर या फिर मेरे ऊपर legitimate अटैक, right? And you might receive this kind of email. Some Google Doc is there and you look at there. इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है. एक तो इसमें थोड़ा सा आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आप ल्यूक जो है इन्हें जानते हैं या नहीं जानते. उसके बाद आपको ये देखने की जरूरत है कि ओके सो स्टार्टेड फ्रॉम हियर आई रिसीव्ड इट ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. आपको डोमेन नेम देखने की जरूरत है कि आ रहा है gmail.com. so it's not an official email like @amu.ac.in. and since I do not know the user Luke and it is not coming from amu.ac.in, let's say because I usually receive it from there, and it is asking me to open this document. Now it might be a harmful software. The moment I click open, it might install something on my system and so on. So I will report this as phishing, and this is saying that yes, this is a phishing email. Show me why this is the case. क्योंकि इन्होंने कहा कि जब भी आप इसमें लिंक ओपन करके देखेंगे तो ये ड्राइव का लिंक नहीं था, ये किसी और चीज का लिंक है. ठीक. नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल. ये मेरे पास एक ईमेल आया है. अब फिर से मुझे उसी तरीके की चीजें देखनी है. देखिए ईमेल आ कहाँ से रहा है. कह तो रहे हैं ये कोका कोला से है, लेकिन लास्ट में कहीं भी coca-cola.com तो नहीं लिखा हुआ. इट इज समथिंग लाइक opvgggeorges.com. Definitely looks like a phishing email. Does not look like a phishing like an original email. It looks like a phishing email. The free blender is pretty good survey incentive. तो ये बड़ा एक और सा ये भी लग रहा है कि आपको बस एक सर्वे है उसका आंसर देना है, और जैसे ही आप इस सर्वे का आंसर देंगे तो फौरन आपको एक ब्लेंडर पूरा मिक्स जो है ये फ्री में मिल रहा है. सो यू आर चोजन टू पार्टिसिपेट इन आवर लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर फ्री. इट विल टेक यू ओनली a minute to receive this fantastic prize. बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, ऐसा कोई नहीं देता फ्री प्राइज. So it's obviously it looks like a phishing attack to me. So if I click on phishing, it says correct, this scam was real blend of techniques. और show me कि क्यों ऐसा है. देखिए ये कह रहा है कि email claims to be coming from Coca-Cola, but the sending address is very random, not possible for a legitimate email, but is signed. तो इससे आपको पता लग सकता है. Next अगर हम देखें, the content, even the text is all is an image. While using some legitimate communication, this technique was used to avoid detection. ये sign है, URL design, blah blah blah. तो इन्होंने पूरा बताने की कोशिश की कि ये कैसे legitimate नहीं है. और फिर उसके बाद आप जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, एक नया टाइप का ईमेल आएगा, वो आपसे पूछेगा. इसमें अच्छी बात ये है कि while they are checking your awareness regarding the phishing email and all, at the same time when you select a wrong answer, let's say if I know that this is wrong, but let's say if I put an legitimate, then it is telling me incorrect.
And it is also showing me why it is incorrect, why this is a illegitimate email or phishing email. तो show me तो ये पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ी है, यहाँ पे ये इन्होंने गलत किया, वैसा नहीं होना चाहिए था, जिससे आपको पता लग सकता है, and so on. And I mean these kind of emails are very common. ठीक, तो इसमें 10 क्वेश्चंस है टोटल, और टोटल आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको. So just search on the email and you will. So you can take this phishing quiz. Things have changed. Recent time में एक बड़ा phenomenon और आ गया है जिससे phishing techniques और sophisticated हो गई हैं. Now we have AI generated phishing campaigns. So a 2024 study showed that fully automated AI based phishing attacks were as effective as crafted by human expert, each achieved clickbait and this and that. The point they are saying that so far people used to think how to craft an email, do the social engineering, make it look like urgent, make it look like interesting, important, and so on, so that people can click on them. Now the same work is being done using the AI-based tool, artificial intelligence-based tool, which makes them even more prone to look like original. और इससे आपके जो malicious attempts हैं उसके भी chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. such real pain bites. Okay? जैसे कि ये research paper है कि evaluating large language models like AI models, complex AI models, they have the ability to launch fully automated phishing campaigns. और उन्होंने ये वैलिडेट किया है ह्यूमन सब्जेक्ट में. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उन्होंने AI टूल से कहा कि आप हमारे लिए फिशिंग ईमेल बनाइए सॉरी, और जब उसे ह्यूमन सब्जेक्ट से पूछा गया, ह्यूमन से पूछा गया, तो वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये वाकई गलत ईमेल है, फिशिंग ईमेल है, या ये असली ईमेल है. लेकिन द नॉलेजेबल पीपल सॉ दोस ईमेल्स, राइट. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके बेनिफिट भी हैं, लेकिन कुछ डाउन साइड्स भी होते ही हैं. तो उनमें से डाउन साइड ये है कि AI टूल इन कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है. And since this research is done by reputed institutes, Harvard Kennedy School of Research and so on, तो ये भी काफी कॉमन. AI-powered phishing, similar things, reports including from Kaspersky. Kaspersky is one of the major companies that develops antivirus. It indicates that organizations are facing mass phishing campaigns that use Gen AI to craft fluent, near perfect emails in multiple languages. ठीक है, हिंदी में भी ईमेल बना देंगे आपके लिए, उर्दू में भी बना देंगे, तमिल में भी बना देंगे, and they are very fluent, very original, very human-like emails. And this another dimension that has been added to email security. These emails often reference current news or company events to make them more believable and bypass traditional filters. So, I mean, the more complex the technology is, the better and more advanced filters and softwares we need in order to stop them. It's a similar point how AI phishing attacks became a threat in 2025. आर्टिकल है, और इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि किस तरीके के नए तरीके के चीजें इस्तेमाल होती हैं AI बेस्ड फिशिंग अटैक्स में. जैसे कि ऑडियो क्रिएशन, वॉइस क्लोन. इसका मतलब है यू रिसीव ए मैसेज with the voice of the CEO, exactly the voice of the CEO, where CEO is dictating you कि आप ये काम जल्दी से जल्दी कर दीजिए in his or her voice. And it is so original that when you hear that, you will, it seems like, yes, this is CEO who is talking. ठीक है, तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी आज कॉमन है AI के बेसिस पे. तो इससे भी एक अलग लेवल का प्रॉब्लम नाउ लाइव फिल्टर्स दैट फॉल्सिफाई अटैकर्स वॉइस ओवर कॉल्स. डीप फेक वीडियो, आप लोगों ने डीप फेक के बारे में सुना ही होगा. तो ऑडियो के अलावा डीप फेक वीडियोस भी होती हैं where an attacker impersonates an employee's face during video call. तो ऐसा लगेगा कि I mean, you will get a video of the person that you already know, and it seems like he is talking, but it is not he is talking. It is just modified with the help of AI, and by the way, it looks very original. So that is the main problem. All of these things, they look very original,
And when you see them in emails or WhatsApp or any communication medium, you believe them and you act accordingly. So you have to be careful about AI-based these super high-tech phishing attacks. Okay. Deepfake impersonation of a government official. ये भी हो चुका है. The US Secretary of State Marco Rubio was impersonated using advanced AI tools, complete with AI-generated voice and text via Signal and spoof email account to deceive diplomats and officials. तो जैसा मैंने आपको बताया, इस टाइप की चीजें हो भी रही हैं, चल भी रही हैं. ये एक उसका एग्जाम्पल है, इंडिया टाइम्स में पब्लिश हुआ है. ये सेक्रेटरी स्टेट है यूएस के मार्को रूबियो. तो इनकी एक वीडियो सर्कुलेट हुई. वीडियो में ऐसा लगा कि ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स को, कांग्रेसमैन को, गवर्नर को. लेकिन बाद में पता लगा कि ये इट वाज अ फेक वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो विद हिज वॉइस एंड हिज फेस बाय द वे, एंड ही कुड नॉट वेरीफाई दैट. ये इस टाइप के अटैक्स भी ये ईमेल के थ्रू भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं. तो ये काफी आज के टाइम में कॉमन. So these are some examples. Voice cloning का ये example है एक. Let's look at this. कैसे काम करता है and so on. चलिए इसको देखते हैं. Yeah, so this is interesting. This was a podcast by is a famous person. His name is Lex Fredman. Yeah, he does podcasts with the influential people. और ये हमारे पीएम के साथ इनका एक पॉडकास्ट है. Now, obviously, since our PM is not very fluent in English, so in the original version, he was saying things in Hindi, but using the voice cloning technique, his Hindi voice, which he was speaking in Hindi, has been converted into English. Now, I will play this. If you can hear, I'm not sure whether you can hear this, but if you can hear, let's focus on, how original it looks when he speaks. Mind you, he's speaking English, but still it seems like that it is he himself speaking English. I'm not sure whether you can hear the voice, but let's see if you can. By the way, can you hear the sound? No, sir. No, no. No. Maybe it's coming in the. Okay, I will share the link with you. इसको आप एक बार देखिएगा. So the point आप समझ लीजिए कि इसमें जो पीएम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हिंदी में, ठीक है, लेकिन इनकी वॉइस क्लोनिंग करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि बोल यही रहे हैं. बिकॉज आवाज की जो पिच होती है या आवाज जो एक होती है एक इंसान की जिससे आप पहचान लेते हैं, तो आप आवाज से इनको पहचान लेंगे, लेकिन इनके जो है इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर दिया गया. सच इट लुक्स वेरी वेरी ओरिजिनल. आप इसे देख भी सकते हैं. वेरी फेमस पॉडकास्ट है. इट हैज 5 मिलियन व्यूज एंड जस्ट राइट लेक्स फ्रेडमैन पॉडकास्ट विद पीएम मोदी. तो आप इसको देख पाएंगे. इसको आप एक बार ट्राई करें. ठीक, इसी तरीके से लेट मी शो यू. शायद वो न्यूज में काफी फेमस भी हुआ था, आपने देखा होगा मे बी. This is another one. ये काफी फेमस यूएसए के एक स्पीकर है, सॉरी एंकर है न्यूज के. तो जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा वो इनका ओरिजिनल है. क्योंकि आपको आवाज नहीं सुनाई दे पा रही है तो आप वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन बस आप इतना देखिएगा कि थोड़ी देर हम लेफ्ट वाला प्ले करेंगे ओरिजिनल. ये इनका ओरिजिनल वीडियो है और राइट हैंड साइड पे इनका डीप फेक वीडियो है. देखते हैं डिफरेंस कितना ज्यादा है. जस्ट फोकस ऑन दैट. Now this time deep fake is running.
I mean, I know you cannot hear the voice, but when you will hear the voice, it's not only that the face is exactly the same with very nice lip movements and gestures and expressions, but the voice is also almost exactly the same, right? So, I mean, this type of technology is now possible, which is making identifying the original content with the fake content has become really difficult now, right? And we'll see more of that in near future. So overall conclusion, what we had, so email security is, we know it's very essential, and current technologies are good, they are decent, but not good enough according to today's technology. So AI can make this security even more challenging in today's concept. And finally, user awareness is important. We should know that these kind of things are taking place, whether with AI or without AI. And remember, never take the bait in your email. So either it is urgency, either it is a reward, either it is some kind of threat. Do not take it. Verify it to the best of your knowledge, and then only respond to that email. Especially if you are working on the official emails. So this is all from my side on the email security and communication security to be broad, but I primarily focus on email security. So thank you very much for the careful listening. And if you have something to ask or something Sir, you want my to say there. question, sir, can I ask? जी बताएं मलिक Sir, साहब. जी sir, what is the difference between spoofing and snooping? Can you type spoofing and Spoofing and snooping. Difference between spoofing and snooping. snooping? Can you Yeah, type the spelling once? yes, sir. हाँ, so आपकी आवाज भी थोड़ा सा सही नहीं आ रही. Any other in the meantime, किसी और पे कुछ अगर query हो? Snooping. Yes. In the context of I mean this email and all. देखिए Yes, sir. देखिए वर्ड से तो हमको समझ में आ रहा है क्योंकि ईमेल में इसकी चीज थोड़ी सी कम होती है, लेकिन स्पूफिंग का तो मतलब होता है कि यू आर, आई मीन you are not the one who are sending the email, but you are trying to send on his behalf. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि let's say legitimate email is vc@amu.ac.in, but आपका email आ रहा है vc@amu@gmail.com, right? So that is the basic idea behind spoofing. I mean, you are trying to look like the original sender, but you are not. Snooping जितना साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसी की बात करें तो स्नूपिंग, हाँ, थोड़ा सा कोशिश की जाती है कि आप जो है कैसे, आई मीन यू आर ट्राइंग टू यू नो गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द, आप उस पर ध्यान रख रहे हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है. जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो मालवेयर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ मालवेयर ऐसे भी इंस्टॉल होते हैं जो आपकी की स्ट्रोक का ध्यान रखते हैं, राइट. तो Yes, sir. आप क्या प्रेस कर रहे हैं, अभी क्या टाइप किया, कितना वेट किया, राइट. तो अगर आपकी की स्ट्रोक को कोई रिकॉर्ड कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका लेट्स से पासवर्ड भी आइडेंटिफाई कर सकता है. ओके, सो by kind of monitoring what you are doing, either by keeping track of your key movements and all, I think that is what you are talking about when we say is snooping. Okay, snoop primarily means monitoring. Somehow they are monitoring you what you are doing. Thank you, sir. Any other query, please? So I think no further queries. So thank you very much, everybody, for listening. And our time is almost over. 3:45 was the time. So
इसके बाद प्रोफेसर सुनील मुस्तजाब आप लोगों का प्रेजेंटेशन सॉरी दिस लेक्चर इंट्रोड्यूस करेंगे एंड आई थिंक he will start from 4. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Bye bye.